students of class 9th ICSE. In the last video, we have discussed about measurement, experimentation and the units. Okay. So in this video, we will be discussing about the kinds of units. Kinds of unit के बारे में हमने पढ़ना है. So overall जो हमारी units है, they are divided into two groups. First group is fundamental units or first type is fundamental units and the second type is derived units. So basically what is fundamental units? The first topic is fundamental units. कि fundamental units क्या होते हैं? Okay. So you can see fundamental units कौन सी units है बेटा? Fundamental units वो है जो किसी पे depend नहीं करती. They are the independent units and the derived units are those units that depend on fundamental units. Okay. So ये कौन है? जैसे आजकल आप देख रहे हैं मीम्स भी चल रहे हैं काफी ज्यादा, आत्मनिर्भर भारत है ना. So these are the आत्मनिर्भर units. They don't need anyone else. They cannot be compared with anyone else. Okay. Suppose जैसे आप लोग चाय बनाते हैं. चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मिल्क चाहिए एंड टी लीव्स चाहिए, शुगर चाहिए और वाटर चाहिए. So जो आपका मिल्क है, मिल्क इज नॉट डिपेंडेंट. मिल्क को आप बना नहीं सकते कहीं भी, है ना. आर्टिफिशियल मिल्क इज डिफरेंट, बट जो नेचुरल मिल्क है उसको आप बना नहीं सकते, है ना. दैट इज व्हाट इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स. वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स. ओके. टी डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स. उसको बना नहीं सकते. दैट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर. ओके. सो दोज आर द फंडामेंटल थिंग्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग टी. सो टी इज मेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. सो टी इज द derived unit. T is that derived quantity. Okay. So we are seeing what is the fundamental units or fundamental quantities. Those which are independent. Those which are independent of any other. They are not dependent on anyone. And the derived units, these depend on fundamental units. Okay. So these are independent, Atmanirbhar, as Modi ji said, and these are the derived. They depend on this one. Okay, fundamental units. Next, coming towards that, they cannot be related to anyone, any other unit. Cannot be related or compared. Anything you can write. They cannot be related to any other unit. किसी और के साथ इसका रिलेशन नहीं बना सकते. जैसे फंडामेंटल के अंदर रहेगा लेंथ. लेंथ का रिलेशन आप मास से थोड़ी बनाओगे या टेम्परेचर से थोड़ी बनाओगे, नहीं कर सकते, है ना. सो दैट इज द इंडिपेंडेंट यूनिट. ओके. इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स. these are also known as basic units. Okay. These are also known as basic units. And the derived units, they depend on fundamental units. Okay. They are derived or they are formed from fundamental units. Okay, they depend on fundamental. Can be, इसी तरह लिख सकते हैं आप, expressed in terms of fundamental units. They are expressed in the terms of fundamental units. So this was a very basic just definition of fundamental and derived units. Now just take an example. Fundamental unit, suppose I take length. There is a unit or there is a quantity. We are dealing with the quantities also. So एक quantity ले लेते हैं length. Suppose आपके पास length है. Okay. Length. Now length does not depend on anything else. किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी और क्वांटिटी पे लेंथ डिपेंड नहीं करती है. ओके. सो लेंथ इज इंडिपेंडेंट. इसका क्या है? सपोज लेंथ की आपने एक यूनिट ले ली मीटर. ओके. सो मीटर इज दैट फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स. एंड डिराइव्ड, सपोज एरिया. वी नो area is always expressed in meter square, centimeter square, something like square, any unit of length and then square on it, second power. So we say unit of area, that is meter square or centimeter square, is length into length. So overall the derived quantity or derived unit meter square, it is dependent on that fundamental unit. Okay.
It is dependent on that fundamental unit. Suppose we are taking an example of speed. You all know what is speed. Speed equals to distance upon time. Okay, so what is distance? We know unit of distance is meter and unit of time is second. So speed की unit meter per second. So this meter per second is the derived unit or derived quantity is speed. So it depends on meter and second and the both are fundamental units. So इन पे fundamental units पर ये derive कर रही हैं and they are expressed in the terms of fundamental units. So this was all about the two kinds of unit, namely fundamental and derived unit. Hope so you understood it. Okay, if you have any doubts, please ask me in the comment section. Okay, now we'll discuss about the systems of units. अब क्या हुआ कि we have many systems. ठीक है, we have many systems like आपको units को क्या करना था, क्लासीफाई करना था और 3 बेसिक यूनिट्स लेनी है, कई चीजें हैं, उसको अब जस्ट अभी डिस्कस करते हैं. So let's take some break, 2 minutes. To discuss about the systems of units, पर उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास 3 मेन क्वांटिटीज हैं या 3 मेन क्वांटिटीज हमारे पास जो हैं जिनके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. ओके, 3 बेसिक चीजें जो है हमारे पास. नाउ सी दोज आर ललित मोहन तिवारी जी. याद रखेंगे ललित मोहन तिवारी. ठीक है, सॉरी ललित जी, सॉरी मोहन जी, सॉरी तिवारी जी जो आप सुन रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई एल फॉर लेंथ, ठीक है, एम फॉर मास एंड टी फॉर टाइम. सो वी हैव 3 बेसिक क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम. ओके, और सबकी अपनी यूनिट्स है. लेंथ की काफी सारी यूनिट्स है, मास की काफी सारी यूनिट्स है, टाइम की काफी सारी यूनिट्स है. कभी भी हम मैकेनिक्स में डील करते हैं ना, जो फिजिक्स में आप लोग किसी भी क्वांटिटी के साथ जब डील करेंगे, कुछ भी नेचुरल फिनोमिना के साथ डील करेंगे, तो ये चीजें आपको जरूर मिलती हैं. टाइम, लेंथ एंड मास आपको जरूर मिलता है. देन हमको ये देखना होता है कि अगर हम लेंथ की कोई एक पर्टिकुलर यूनिट यूज कर रहे हैं, सो उसके साथ मास की कौन सी यूनिट यूज करेंगे एंड टाइम की कौन सी यूनिट यूज करेंगे. बिकॉज वी हैव मेनी यूनिट्स फॉर all the 3 quantities that we have to discuss further in this chapter. Okay, so there are 3 systems that are made. 3 सिस्टम हम लोगों ने बना लिए इनके लिए. सबसे पहला हमने सिस्टम बनाया है MKS सिस्टम. सेकेंड बनाया है CGS सिस्टम. देन थर्ड वन इज FPS सिस्टम. So 3 systems we have made to learn about the units. Okay, 3 systems of units we have made. First system is MKS, then CGS, then FPS. Now see, M, C, F. These will be, the first one will be the units of length. Then K, G and P. These will be the units of mass. And S, S and S. This will be the unit of time. Okay, so first come to the MKS system. MKS means M for meter. So in the MKS system, the unit of length is meter, and in MKS system unit of mass is kilogram, and in MKS system the unit of time is S for second. Okay, it is clear. Then comes CGS system. So length की कौन सी यूनिट C से होती है, that is सेंटीमीटर. Then मास की है G for ग्राम and S for second. Okay, the next FPS system. F for foot, P for pound and S for second. Okay, so these 3 units are there. These 3 systems are there, in which the first system is MKS, CGS and FPS, and these are the quantities corresponding to these systems. Okay, so with these 2 systems you are very familiar, and with the third system, that is foot, pound and second. Okay, we are learning about something like what is 1 foot. अगर आपको वैल्यू पता है 1 foot, how much 1 foot कितना होता है? 1 foot होता है 0.305 meters. ये होता है 0.305 meters. So if you need to convert, you can note it down. Okay, then next come pound. पाउंड को आप लोग
रिप्रेजेंट करते हैं एलबी से। एलबी आप लोगों ने अगर रेसलिंग देखी है या फिर जिम गए हैं, जिम में जो आप डंबल्स यूज करते हैं उसको मोस्टली किलोग्राम्स में क्या करके पाउंड्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, सो पाउंड क्या होता है, 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.45 kilograms. Okay, 1 lb a pound equals to 0.45 kilogram. Okay, so this was about a system of units. अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का काम क्या है आप देखेंगे। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है किसी भी तरीके का, जैसे आप कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं, कुछ आपने लॉ स्टडी करना है, तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, सो प्लीज बी मेक श्योर दैट जो आपकी यूनिट्स हो वो एक सिस्टम में ही काम करेंगी, हमेशा एक सिस्टम में आप लोग वर्क रह के काम करेंगे। जैसे कि एम केस, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन एज मीटर, so it is compulsory to take the length, the unit of mass as kilogram and time as second. If the unit of length is taken as foot, so it is compulsory to take the unit of mass as pound. So you have to be very careful while dealing with the numericals further in this chapter. So first of all, we have to study about the system of units that you have done. Okay. So what was that? These were the older system of units. ये पहले चला करते थे, अब इसका काम नहीं है, ठीक है ना। अब इसका काम नहीं है, इसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। पहला वाला मेट्रिक सिस्टम भी है, इसका नाम है, पर अब इसको यूज नहीं किया जाता, इनको अलग अलग यूज नहीं किया जाता। अब क्या किया, अब हमने एक कॉमन सिस्टम बना लिया है, ओवरऑल एक सिस्टम बना लिया जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ओके द होल वर्ल्ड विल रन अकॉर्डिंग टू दोज यूनिट्स, दोज क्वांटिटीज, और उनकी जो फिक्स यूनिट हमने कर दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट सिस्टम इज दैट सिस्टम which is acceptable worldwide, और उसका नाम है SI system. Okay, so the system of unit, 3 systems we have discussed, and I told you that there is one system that is acceptable worldwide from 1960. Okay, 1960 के बाद पूरी वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ स्टडी करेंगे। उस सिस्टम का नाम आया SI system. Okay, SI system and the full form is Systematic International Unit System. Systematic International Unit System. So you have to remember the full form of it. Okay, it is asked in exam for 1 marks. Now, how many quantities or how many units are mentioned in this system? So you have to remember, in the SI system we have 7 fundamental or basic and 2 complementary. 2 complementary units and 7 fundamental units are mentioned in this system. Okay. Okay, so see, what are those 7 fundamental units? The first unit is length. Your first quantity is length. This is the physical quantity we have to measure, and unit is the quantity which is used to measure this one. So length को किस में measure करेंगे? मीटर. So we have to say length की SI unit होती है मीटर. Okay, meter is the SI unit of length. Then किलोग्राम किसकी है? मास की. टेम्परेचर की है? टेम्परेचर की होती है आपकी केल्विन. ओके, टेम्परेचर की होती है आपकी केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल. ओके, एंड वन मोर इज देयर, दैट इज टाइम. टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड, ऐसा ही. ओके, सो नाउ सी, मीटर आप सबको पता है, किलोग्राम आपको पता है, टेम्परेचर आप लोग टेम्परेचर किस में नापते हो? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में. ओके, सो SI unit is taken as Kelvin, standard unit. Then the luminous intensity means, luminous means light. Okay, light की intensity, light की intensity कितनी ज्यादा light है, कितनी कम light है, that is taken, that is a unit, luminous intensity, and it is measured in candela. So you can remember candela, candle से light आती तो candela, luminous intensity. Okay, electric current is measured in ampere, amount of substance in mole, and time in second. Okay, so you have to remember all these quantities. Those are 7 fundamental quantities and the symbols of them.
सो मीटर का सिंबल है स्मॉल m, किलोग्राम के जी, केल्विन का कैपिटल के, कैंडेला का सी डी, एम्पियर का कैपिटल ए, मोल का एम ओ एल एंड सेकेंड का स्मॉल एस. ओके, सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, then coming towards the 2 complementary quantities, what are the those quantities that are extra? So the first one of those complementary quantity is angle. एंगल की यूनिट हम लोग लेते हैं रेडियन में. आप लोग एंगल मेजर करते हैं डिग्रीज में, है ना. सो हम लोग लेते हैं इसको, जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन. रेडियन और सिंबल है आर डी. ओके, नेक्स्ट है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की होती है यूनिट होती है स्टेरेडियन. स्टेरेडियन एंड द सिंबल इज एस टी आर डी, एस टी डॉट आर डी. ठीक है ना. ये हमारे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में लास्ट सिस्टम या जो मेन सिस्टम है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड, एसआई सिस्टम. फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल. 7 fundamental quantities are mentioned here and 2 complementary quantities. These are those 7 fundamental and these are those 2 complementary quantities. Okay, so now the next we will see about what? Next we will see about those prefixes that we use with units. Suppose prefixes क्या होता है? Prefixes means जो unit से पहले लगाए जाएंगे. Suppose आपने देखा है किलोग्राम means ग्राम के आगे लगाया किलो, सेंटीमीटर मीटर के आगे लगाया सेंटीमीटर. तो वो सेंटी किलो क्या है, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करें. Okay, so students, we will learn now about prefixes of units. So prefixes मैं यहां नहीं बना रहा हूं, इमेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है. सो आप वहां पे देख सकते हैं कि prefixes कैसे कैसे हैं. सो सी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको prefixes, symbols and meanings, है ना. तो आपको दिख रहा है डेका. डेका इज डीए. सबसे पहले जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है जो भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्लेड है वो है, देखो सारी पावर आपकी पॉजिटिव पावर्स है. पॉजिटिव पावर्स मीन दीज आर यूज फॉर बिगर यूनिट. सपोज आपको मीटर है एंड डेका मीटर लिखेंगे. ओके, सो आप देखेंगे डेका मीन्स 10 की पावर 1, हेक्टो मीन्स 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड नोट डाउन इन योर नोट्स. एंड now see the second table is in front of you. These are used for small measurements. Now the second table we are seeing is used for the small measurements, and this is the deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto, yepto. You can see this. Okay, so these are all the negative powers. So these are all helpful for us in explaining the size of units. ओके, साइज ऑफ यूनिट्स को एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा रहता है. अब आप देखेंगे सपोज मैंने लिखा मीटर. सपोज मैं लिखता हूं मीटर. ओके, सो मीटर के एक साइड चलते हैं बड़ी यूनिट्स एंड मीटर के एक साइड चलते हैं स्मॉलर यूनिट्स में. तो सपोज मैंने बोला डेका मीटर, मैं बोलता हूं डेका मीटर. सो डेका मीटर मींस 10 टू द पावर 1 मीटर और 10 मीटर. सो आई कैन से डेका मीटर. अगली यूनिट आ गई डेका मींस डीए एंड मीटर. सो दिस इज डेका मीटर. डेका मींस 10 की पावर 1 एंड मीटर मींस मीटर. So 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 1 मीटर. ऐसे हमने देखा था 1 किलोमीटर. किलोमीटर, सो किलोमीटर में क्या है, किलो मींस 10 की पावर 3 मीटर्स. ओके, सो किलो मींस 10 की पावर 3 एंड मीटर मींस m. सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर मींस 1000 meters. Okay, and suppose we see these are the some base what bigger units. So coming towards some smaller units, we saw that deci we saw deci was 10 to the power minus 1. So if I say decimeter dm, so decimeter means 10 to the power minus 1 meter. Okay, centimeter, centi means 10 की power minus 2 meter. Okay, so centimeter means 10 की power minus 2 meter. What do you mean by centimeter? 10 की power minus 2 means 1 centimeter equals to 1 upon 100 meter. So if we divide meter into 100 parts, we get 1 centimeter. And you know that very well, 100 centimeter equals to 1 meter. Okay, so these prefixes will be used in explaining the units. So you should know all these prefixes. I hope till the next video uploads, आपको ये सब अच्छे से आ जाएगा. Okay ना? So you go through all these prefixes. I have given you
Go through this video very properly, learn those 3 systems of units and everything. Wait for the next video, it will be uploaded very soon. In that video, we'll discuss properly about the units of length, then units of mass and units of time. What all units of length we use, mass we use, mass units, and then time, units of time. Okay, so we'll discuss in very detail all 3 quantities. So now it's all for today. Thank you very much. Subscribe to our channel. Stay tuned. Stay with your friends.